In the third part of the chapter 2 of Kanski, we will talk about the other eyelid cyst. In the second part of the video, we have talked about the calizion. Now we will talk about the other eyelid cyst. As we have read, the cyst of Zeiss. So Zeiss is a modified sebaceous gland. Cyst of Zeiss is a small, non-translucent cyst on the anterior lid margin arising from the obstructed sebaceous gland which is associated with the eyelash follicle. So this is a small, non-translucent cyst arising from the blocked sebaceous gland on the anterior lid margin. Now, cyst of Moll. We know that the gland of Moll is a modified apocrine sweat gland. So, cyst of Moll or apocrine hydrocystoma, it is a small retention cyst of the lid margin apocrine gland. It is a cyst of the sweat gland. It appears as a round, non-tender, translucent, fluid-filled lesion on the anterior lid margin. It is translucent fluid-filled. The cyst of Zeiss is a non-translucent cyst. This is a translucent cyst. So this is the difference. This is the cyst of Moll, which is the translucent cyst on the lid margin. Third is the sebaceous pilar cyst. This is caused by blocked pilosebaceous follicles and it contains sebaceous secretions. The gland orifice will be visible. It is rarely found on the eyelid, although it may occasionally occur at the inner canthus. The sebaceous pilar cyst is rarely found at the eyelid, although it may be present on the inner canthus. This is the sebaceous cyst because of the blocked pilosebaceous unit. Now is the comedones. These are the plugs of keratin and sebum within the dilated orifice of hair follicles. It is the plug of keratin and serum within the dilated orifice of hair follicle. It is mostly seen in patients with acne vulgaris. They may be either open, and since when they are open, they are exposed to the pollution and the pollutant of the environment and they become black in color because of the plug of oxidized material, or when they are closed, they are the whiteheads, as we all know, blackheads and the whiteheads. Melia. This is caused by the occlusion of the pilosebaceous units, resulting in the retention of keratin. These are tiny, round, white superficial papules that tend to occur in crops. So, these are the blackheads, which we have seen very commonly, and this is the melia. Okay, white in color. Then the epidermal inclusion cyst. It is usually caused by the implantation of epidermis into the dermis following trauma or surgery. अगर कोई ट्रॉमा या सर्जरी होता है तो ये हमारी एपिडर्मिस है और ये डर्मिस है, तो एपिडर्मिस जो है वो डर्मिस में चली जाती है. देयर इज इम्प्लांटेशन ऑफ epidermis into dermis following trauma or surgery. It is a slow growing round firm superficial or subcutaneous lesion which contains keratin. So it is an inclusion cyst because epidermis is included into the dermis. Epidermoid cyst is uncommon. It is usually developmental, occurring along the embryonic lines of closure. It is similar in appearance to an epidermal inclusion cyst, but the anatomy differs. Dermoid cyst is usually subcutaneous or deep and is typically attached to the periosteum at the lateral end of the brow. It is caused by the skin which is sequestered during the embryonic development. So G, this is the dermoid which is attached to the periosteum, and F is the epidermal inclusion cyst. This is the epidermal inclusion cyst which is caused by the implantation of epidermis into the dermis following trauma or surgery. Dermoid is attached to the periosteum caused by skin which is sequestered during embryonic development, and the eccrine hydrocystoma. It is less common but is similar in appearance to the cyst of Moll, except that it is usually located along the medial or the lateral aspect of the lid. Medial या lateral aspect में होता है lid के,
बट डज नॉट इन्वॉल्व द लिड मार्जिन इटसेल्फ। ये लिड के मीडियल या लेटरल एस्पेक्ट में होगा लेकिन लिड मार्जिन को इन्वॉल्व नहीं करेगा, जबकि जो सिस्ट ऑफ मॉल होता है वो लिड मार्जिन पर होता है। ठीक है, जो सिस्ट ऑफ मॉल है वो हमारा लिड मार्जिन पर होता है। आगे बात करते हैं हम लोग xanthelasmas की। xanthelasma जो होती है कॉमनली बायलेटरल कंडीशन होती है, मिडिल एज्ड और एल्डरली इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करती है। इट इज़ अ सब टाइप ऑफ xanthoma। हाइपरलिपिडीमिया जो होता है दैट इज़ फाउंड इन 1/3 ऑफ पेशेंट विद xanthelasmas, in whom corneal arcus may also be found because that is also a type of lipid deposition. In contrast to chalazion, fat in xanthelasma is mainly intracellular. chalazion में हमने पढ़ा था कि फैट जो होता है वो एक्स्ट्रासेलुलर लिपिड होता है सराउंडेड बाय द एपिथेलियोइड सेल्स, लेकिन जो xanthelasma में फैट होता है दैट इज़ इंट्रासेलुलर विद लिपिड लेडन हिस्टियोसाइट्स। फोम सेल्स जो होते हैं वो डर्मिस में होते हैं। इंट्रासेलुलर होता है, लिपिड लेडन हिस्टियोसाइट्स हमारे डर्मिस में होते हैं। xanthelasma जो होते हैं दे आर येलोइश सबक्यूटेनियस प्लाक्स यूजुअली ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आईलिड, कॉमनली होते हैं बायलेटरल एंड मल्टीपल। इसमें जो है इंट्रासेलुलर फैट है बहुत सारा, लिपिड लेडन हिस्टियोसाइट्स या फोम सेल्स होते हैं, एंड दिस इज द xanthelasma। This is the xanthelasma. This they are usually multiple. ट्रीटमेंट प्रिंसिपल जो ट्रीटमेंट होता है वो कॉस्मेसिस के लिए होता है। रिकरेंस 50% में होती है एंड इन मोस्ट कॉमन इन पेशेंट जिनमें कि हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया होता है जो कि 1/3 ऑफ पेशेंट में होता है। ट्रीटमेंट इज सिंपल एक्सीजन। इट इज़ कॉमनली परफॉर्म वेयर द स्किन वेयर एडिक्वेट एक्सेस स्किन इज प्रेजेंट। Second is microdissection. The larger lesions can be raised in a flap. The fatty deposits dissected from the underlying skin under a surgical microscope using micro scissors and the skin replaced. इस हम लोग क्या करेंगे, एक स्किन का फ्लैप उठाएंगे, जो फैटी डिपॉजिट्स होंगे स्किन के कांटेक्ट में उनको हम लोग रिमूव करेंगे और स्किन को रिप्लेस कर देंगे। बाकी मेथड्स आर द गुड रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग केमिकल पीलिंग विद बाय और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. Laser ablation and cryotherapy have advantages but may be more prone to scarring including pigmentary changes. लेज़र एब्लेशन कर सकते हैं और क्रायोथेरेपी कर सकते हैं लेकिन इसमें स्कारिंग होती है, साथ में पिगमेंट्री चेंजेस होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेनाइन एपिडर्मल ट्यूमर्स की, जिसमें आता है स्क्वामस सेल पेपिलोमा, सेबोरिक केरेटोसिस, एक्टिनिक केरेटोसिस। ओके, थैंक यू।